in tobacco taxation. Tobacco taxation is one of the most cost-effective ways to achieve positive outcomes and reduce consumption. Despite the WHO's recommendation of 70% tax share in retail prices of the cigarettes, Pakistan's current taxation system stands at 68.3% for premium brands and 52.6% for economy brands, averaging at almost 54.8%. This disparity has contributed to the affordability of tobacco products, particularly youth and low-income groups and populations. Compounding this issue, the tobacco industry employs tactics such as front reclassification campaigns to resist tax reforms and market dominance. A significant concern is the industry's interference and exaggerated of illicit trade, an administrative and enforcement issue as a taxation problem. By presenting the findings of recent studies and global best practices, this seminar seeks to foster a comprehensive understanding of the tobacco industry's interference in taxation and promote policy recommendations that align with international standards. This event aspires to catalyze actionable strategies for effective tobacco taxation and tax administration, the significance of improved enforcement mechanism such as tobacco token trace system, and protection of the public health interests in Pakistan. And for this discussion, we have been joined by a very rich and scholars which are there on the panel. We have with us Dr. Abid Sulaim, who is the Executive Director of STPI. We have with us Mr. Muhammad Asif Iqbal, who is the Managing Director of SPDC. We have been joined by Dr. Majid Siraj. He is the Executive Director of Health Syndicate. We have been joined by Ms. Sania Ali Khan, who is a tobacco control advocate. We have been joined by Dr. Wasim, who is a researcher and is also an advisor with STPI. We have partners from academia, we have partners from development sector, and researchers as well. With this brief introduction, I will now request Dr. Abid Sulaim to please give his welcome remarks. Thank you, Wasif. As we speak today, the World No Tobacco Day, I think ये जो time है और ये discussion है, it's quite pertinent and relevant because it is sort of a pre-budget discussion. Government of Pakistan and all the provincial governments, they are almost now compiling and finalizing their जो final budget numbers और hopefully after Eid budgets जो हैं वो पहले फेडरल गवर्नमेंट का और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का आने शुरू हो जाएंगे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं टैक्सेशन की, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कौन से सेक्टर्स को टैक्स नेट में आना चाहिए, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे के टैक्सेस कम होने चाहिए. तो STPI हैज़ बिन डूइंग इट. पूरा महीना मई का जो है हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करते रहे हैं. और टबैको टैक्सेशन एक ऐसा इशू है जिस पे कि शायद हम पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं. हम जब 3 tier इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त भी हमने उसकी मुखालफत की थी कि इसको डबल टीयर या सिंगल टीयर एक यूनिफॉर्म टैक्स या एटलीस्ट डबल टीयर जो है वो होना चाहिए. आज भी हम यही बात दोहरा रहे हैं कि जब हम टबैको इंडस्ट्री की और उसकी टैक्सेशन की बात करते हैं. सो my first point that I want to highlight here is tobacco is not only cigarettes. Cigarette of course is important, लेकिन tobacco is beyond cigarette. और जब हम taxation की बात करें तो we need to talk of taxation not only जो आपके पास cigarettes आते हैं formal या informal sector में, but also the chewing tobacco and the vapes and many other type of tobacco जो कि किसी तरह के फॉर्मल नेटवर्क में उस
मौजूद ही नहीं है। वी हैव बिन टॉकिंग, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म है वो फुली तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहा हो। ये बहुत ज़रूरी है कि टबैको पे जो टैक्सेशन है वो एक सिंगल टीयर में हो। जब एक चीज़ जो है वो डेट्रीमेंटल टू हेल्थ है तो फिर उसमें ये जो है डिस्टिंग्विश करना कि ये अपर ब्रांड है, इसको अपर मिडिल क्लास पीती है, इस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, और ये एक लोअर मिडिल क्लास सिगरेट कंज्यूम करती है उस पर टैक्स कम होना चाहिए। ये ऐसे ही है कि हम कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द इनकम शायद हम लोगों को हेल्थ हैजर्ड्स को एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो अच्छा जी ज़्यादा टैक्स है, शायद आप उससे जो है डाइवर्ट हो जाए, और अगर आपकी इनकम कम है तो हम आपको छुट्टी दे रहे हैं कि आप जितने मर्जी सिगरेट पिए चूँकि आपकी इनकम कम है, विच हैज़ इट्स हेल्थ टॉल, विच हैज़ द अदर टॉल्स एज वेल। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी इंश्योर करनी चाहिए कि जो आपका इस वक्त एवरेज टैक्स चल रहा है, अगर सिगरेट्स उससे कम प्राइस में कहीं पे सेल हो रहे हैं तो वो कैसे बिक रहे हैं। जाहिर है कि इसका मतलब है कि उसमें ना सिर्फ टैक्स एवेजन है बल्कि उसमें इलीगल टबैको जो है वो भी आ रहा है, और उसको भी हमें देखना होगा। और ऑफन इन अवर डिस्कशन परहैप्स वी थिंक कि जी टैक्सेशन और इलीगल सिगरेट ये दो मुतजाद चीज़ें हैं, जबकि मैं एक ही चीज़ के दो रुख दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट सिगरेट्स। और उन सिगरेट्स को अगर आप अपने टैक्स को लो रखने का जवाब ये बनाते हैं कि जी अगर टैक्स बहुत हाई कर देंगे तो मार्केट में स्मगल्ड सिगरेट आ जाएंगे, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप अपना इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बेहतर बनाएं। आपके पास इलीगल टबैको जो है वो आए ही क्यों, टैक्स जो है वो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फलां चीज़ जो अगर इस पर मैंने टैक्स ज़्यादा कर दिया तो इसकी स्मगल्ड क्वांटिटी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। सो आई एम एडमिटिंग एंड आई एम कन्फेसिंग कि मेरा जो स्मगलिंग प्रिवेंशन मैकेनिज्म है वो मुल्क का बहुत वीक है। आई विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द इलीगल कमोडिटीज गेटिंग ट्रेडेड, और आई थिंक उसको भी हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो आज के दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे कि एक्सपर्ट्स शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर वो बात कर सकते हैं। सिगरेट्स को तो चले आप किसी न किसी तरीके से फॉर्मल नेटवर्क में ले आए, हमें ये भी पता है कि अच्छा वो स्मगल होकर भी आते हैं। व्हाट अबाउट द नॉन स्मोकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, जो नॉन हीटेड टबैको है, जो च्यूइंग टबैको है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की शक्ल में जो डिस्प्ले में आपको मिलता है, जो वेब्स हैं जिसके कि अगर आप आजकल इस्लामाबाद के मरकज़ों में जाएं तो पूरे के पूरे प्लाजाज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के वेब से भरे हुए हैं। तो क्या वो कहीं पर रजिस्टर्ड हैं, क्या वो किसी टैक्स नेट में है, क्या उस पर कोई मिनिमम टैक्स जो है वो लागू होता है? अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियसली इट्स निकोटिन। और आज का जो दिन है ये सिर्फ एज ए सेड इट्स नॉट ओनली अबाउट टोबैको, इट्स आल्सो अबाउट एक्सपोजिंग द निकोटिन टैक्टिस एज वेल। तो मेरे ख्याल में हमें इसको एक कंप्रिहेंसिव ईवल के तौर पे, हॉलिस्टिक ईवल के तौर पे लेके चलना चाहिए, बजाय इसके कि किसी एक प्रोडक्ट को हम लें और वो अपनी शक्ल चेंज करके चार नई प्रोडक्ट्स की शक्ल में सामने आ जाए, और जिस पे फिर हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो उस पर खामोश हों, और उसकी वजह से वो पनपता चला जाए जब तक कि वो एक रेड लेवल पर नहीं पहुंचे जहाँ पे कि उसको कर्व करना ज़रूरी हो जाए। हमें उसको आज ही इन सारी चीज़ों को चैलेंज करना चाहिए। अब मैं बजट के तनाज़र में फॉर एग्जांपल, और हमने पहले भी ये बात की कि भाई आपने दूध पे जीएसटी लगा दिया, प्रोसेस मिल्क पे, आपने जूसेस जो हैं उन पे जीएसटी लगा दिया 18%, और आप सिगरेट्स जो है उस पर टैक्स लगाते हुए डर रहे हैं कि जी सिगरेट हो या उस पर डबल टीयर में आप लगा रहे हैं। अगर यही फार्मूला चलना है तो फिर वो जो दूध का छोटा जो है पाव वाला पैक, उस पर टैक्स कम क्यों नहीं है? अगर हम ये कहते हैं कि सिगरेट जो है वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर इनकम अर्नर के लिए टैक्स कम रखें, तो फिर वो जो 250 ml वाला दूध का पैकेट है जो कि आप लोअर मिडिल इनकम अर्नर जो है वो बाई कर रहे हैं, तो फिर उस पर 18% की जगह उस पर टैक्स में कमी करें। तो आई थिंक ये जो प्रायोरिटीज हैं इस वक्त रेवेन्यू जनरेट करने की, वी नीड टू रीथिंक। टोबैको को हमें एज ए हेल्थ इवल के तौर पे लेना है, नॉट एज ए रेवेन्यू जनरेटिंग मैकेनिज्म। सो जब हम टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट आई एम वेरी क्लियर कि मैं उससे ये बात नहीं कर रहा कि मुझे इससे रेवेन्यू मिले और मेरा रेवेन्यू कंपनसेशन हो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको डिस्करेज किया जाए ताकि लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करना
बंद करें। और इसी तरीके से आप इसको अगर थोड़ा सा एफपीआर अपनी प्रायोरिटीज को रीअरेंज कर ले तो मेरा ख्याल है बहुत सी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे टैक्स बढ़ाया जा सकता है, और बहुत सी जो मुफीद चीज़ें हैं उन पे टैक्स कम किया जा सकता है। और टोबैको तो एक ऐसी चीज़ है इन एनी फॉर्म डेट नीड्स टू बी टैक्स्ड, और वो टैक्स यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल जो है वो डिस्करेज हो। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, एंड आई एम श्योर के हमारे एक्सपर्ट्स इस पे मजीद बात कर रहे होंगे। Thank you very much, Dr. Abid, for your very kind and very intelligent input. I would now request Mr. Muhammad Asif Iqbal to come up on the podium for his formal presentation. थैंक यू डॉक्टर आबिद, आपने एक अच्छा स्टेज सेट किया हमारी गुफ्तगू के लिए। ये कैसे चलेगा? डू हैव वो आप चेंज कर देंगे? ठीक है, तो कर दें। ओके, तो सबसे पहले बैकग्राउंड इसका मैं बता दूं। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ ट्रेड ऑफ सिगरेट की बात है, जो कि नॉन टैक्स सिगरेट होते हैं उनकी। तो उसका बैकग्राउंड सबको याद होगा, ज्यादातर लोग, कि फरवरी 2023 में हुकूमत ने बहुत सब्सटेंसिव इजाफा किया था फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसके नतीजे सिगरेट की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद हमने उसका जायजा लेने के लिए एक सर्वे किया था कुछ 6 महीने बाद, हुआ था। फिर हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक सर्वे किया जिसमें हम देखना चाह रहे थे कि प्राइसेस बढ़ी है तो उसका कोई इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है कंजम्पशन पे, बाकी सब चीजों पे। तो सर्वे सर्वे को 5,000 स्मोकर्स का हमने किया, क्लोज टू 4 इंटरव्यूज को में। तो उसमें फिर हमने देखा कि कंजम्पशन भी कम हुई है, शिफ्ट भी किया, ब्रांड स्विचिंग भी की, और इसकी जो थी, आप समझ लें कि जो कंजम्पशन वाली जो डिक्लाइन थी, मेरा ख्याल है ये 10.2 नहीं, 19.2 है, इसमें टाइपो है। तो 19%, 19.5 या 6% कंजम्पशन जो थी वो ड्रॉप थी, एज रिपोर्टेड बाय द स्मोकर्स। खास तौर पर पूछा था, और उसमें हम देखना चाह रहे थे कि जो नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स हैं उनका कंपोनेंट कितना है। तो चूंकि इसमें एक आम तौर पर ये कहा जाता है कि जब ये बढ़ती है कीमतें तो इलिसिट रेट जो है वो बढ़ जाती है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब देखा जाता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमने इस वक्त अंदाजा लगाया कि 33% है जो शेयर है पाकिस्तान में, 100 पैक कर बिक रहे हैं तो उसमें 33 जो है वो नॉन टैक्स पेड है। अच्छा, इसकी नेशन वाइड सर्वे था, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक सैंपल डिजाइन था जो हमने इस्तेमाल किया। और दूसरी अहम बात ये थी कि रादर देन पैक कलेक्शन सर्वे, इट वाज सर्वे जिसमें स्मोकर्स के इंटरव्यूज भी किए गए थे, उनसे उनकी कंजम्पशन बिहेवियर के बारे में पूछा गया था, और उनके पैक्स की तस्वीर भी ली गई थी। तो ये सिस्टमैटिक स्टडी थी जिसकी बेस पे हमने अंदाजा लगाया कि वो 33% जो है वो इसकी वो है नॉन टैक्स पेड की जो एक्सटेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पिछले 5-6 महीने से जो चल रहा है, एक मीडिया कैंपेन जो थी वो शुरू हुई टोबैको इंडस्ट्री की तरफ से, जिसमें एग्जैजरेटेड बताया गया कि जी पाकिस्तान में 60% बढ़ गई है, जो है वो शुरू शुरू में 60 का, फिर पिछले में पहले एक इदारा को IPOR ने कहा कि 54% है एक्सटेंट सिगरेट की। उसको पता चला कि वो जो प्रेजेंट किया है रिजल्ट, से इंटरप्रेट करके और मिसलीड करने के लिए किया है। सबसे अहम बात उसमें ये थी कि उन्होंने कहा कि जी हमने 400 ब्रांड देखे हैं दुकानों पे रखे हुए, 400 में से 250 ब्रांड हैं इलीगल है। अब ये सवाल पूछने का था कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत कंसंट्रेटेड है, टॉप 10-15 ब्रांड जो 80% मार्केट को कैप्चर करते हैं। तो आप नंबर एस्टिमेट कर सकते हैं एक्सटेंट, जब तक कि आपको ये पता हो। आप फर्ज करें कि 5 सोडा की बोतल रखी किसी मार्केट में,
उसका शेयर 80% है और बाकियों का मिला के 20% है, तो चार जो चार 20% कहीं का है कि पांच में से चार इलीगल है, दैट इज लाइक 80% इलीगल। तो इस अब जाहिर है वो चूंकि इसकी अब मैं आप सबको पता है कि क्यों सब कुछ होता है और कैसे पब्लिश हो जाती हैं चीजें और किस तरह से प्रोपेगेट होती हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम, अच्छा दूसरी बात ये थी, आगे जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा दूसरी बात ये थी कि ये जो क्लेम है इसका था कि जब हम इसमें प्राइस बढ़ी, उसके बाद हमने सर्वे किया, उसके रिजल्ट आ गए। अब दो सर्वे इसके बाद से अब तक ना तो टैक्स इंक्रीज हुआ है और प्राइस अगर बढ़ी तो 2 साल में 7% प्राइस बढ़ी है, जो कि उससे भी बहुत कम है। जो हमारा सीपीआई इस दौरान 1.5 साल में 9.5 था। तो अब फैक्टर समझ में आता है कि जब प्राइस भी तो बढ़ी, अपनी हैबिट्स क्यों चेंज कर लेंगे, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड दैट। तो इसलिए फिर हमने ये सोचा कि ये जो हमारा एजम्पशन ये थी कि या तो ये इतना ही रहा होगा या थोड़ा बहुत फर्क हुआ होगा, तो देयर इज नो रीजन फर्क 60% या 50% हो गया। तो इस सर्वे को रिपीट किया, रिपीट से वर्जन था वो सर्वे बहुत डिटेल था, जिसमें कंजम्पशन पैटर्न हर चीज थी और उनके इनकम भी पूछी गई थी। वो डिफरेंट स्टडी थी, तो हम उसी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एक एवरेज क्वेश्चन जो था, जो कि ओनली दैट वाज फोकस्ड ऑन द नॉन टैक्स सिगरेट्स, उसको हमने किया। तो ये सर्वे फिर हमने पिछले 2-3 महीने में किया। बिफोर आई गो टू द मेथोडोलॉजी, मैं इसमें चंद लोगों को सॉरी हाँ एक तो फाउंडेशन वाले आज मेरे ख्याल में नहीं आए हैं। अच्छा, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस सर्वे की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वर्क फाउंडेशन ने हमें फराहम की थी, और इसके अलावा हमारे कुछ मुजाहिदीन मौजूद हैं। सबसे अहम सुनहरा समूह, अगर आप एक लम्हे के लिए खड़े हो जाए, ये हमारी सर्वे सुपरवाइजर है। इस तमाम जंग और सैलाब और शेष वाले, उसके अलावा हमारी टीम की टैंकरा है, रबिया है, आसम एंड मोहसिन, ये लोग बैठे हैं। तो इन सब लोगों ने बहुत मदद की। चंद हम के करीब हमारे साथी थे जिन्होंने पाकिस्तान भर में सर्वे किया। थैंक यू वेरी मच, आगे चलिए। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन सर्वे था कि आप एक पीएसयू में जाते हैं। अब ये तय होता है कि आपने हर 8वें घर जाना है, हर 10वें घर जाना है, आप वहां जाते हैं, सब पूछते हैं, अगर स्मोकर नहीं है तो आप आगे चले जाते हैं। तो 10,000 घर घूमने गए और 6,600 के करीब जो है वो इंटरव्यू इन्होंने की। और ये 16 डिस्ट्रिक्ट थी, जिसमें इस्लामाबाद शामिल, पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट। हमने किया था कि चारों सूबों के जो कैपिटल है वो, और उसके अलावा 2-2 डिस्ट्रिक्ट लिए थे, पंजाब की आबादी की वजह से 6 डिस्ट्रिक्ट लिए। उसमें कहा कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई हाई का हो, कोई रिमोट हो, कोई कुछ हो। जैसे पंजाब में हमने सरगोधा भी किया है, लाहौर है, तो जेलम है, बहाउद्दीन है, ये सब हमने किया। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सके थे, वो है तुर्बत का, क्योंकि वहां पे हालात कुछ दुरुस्त नहीं थे। लेकिन उसका हम समझते हैं कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए कि उसका जो सैंपल वेट है वो बहुत कम है पॉपुलेशन के लिहाज से। और ये रिटर्न सेक्शन था, जैसे मैंने बताया, फेस टू फेस इंटरव्यू थे। अच्छा, की फाइंडिंग इसके हम देखते हैं। Thank you, Dr. Shahbaz Saab and Wasim. Thanks for joining. तो टॉप 20 ब्रांड्स जो हैं, उनका शेयर जो है वो 76% है। अच्छा, ये पिछले उसके मुकाबले में थोड़ी सी डाइवर्सिटी आई है। पहले 80% को कैप्चर कर रहे थे, अब 76 को कर रहे हैं, बट इट्स क्वाइट कंसंट्रेटेड कि मार्केट में कैप्चर किए थे वो 250 के ज्यादा ब्रांड थे, तो उनमें से टॉप। तो ये उनके पास थी। अब इसमें हमने इस टेबल में लिखा है कि रजिस्टर्ड ब्रांड कौन से हैं और अनरजिस्टर्ड कौन से हैं। तो जितने 200-250 से ज्यादा ब्रांड्स देखें, जाते हैं तो 10 सीट रखी होंगी, 10 की बिक्री हो रही है।
तो जो हमने ऑब्जर्व की कंजम्पशन के लिहाज से स्मोकर्स 250 से ऊपर, 255 वो तकरीबन इतने ही हैं। तो 74% जो थे ब्रांड, वो रजिस्टर्ड ब्रांड थे। रजिस्टर्ड ब्रांड का जो शेयर है वो 74% था, और जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स का शेयर है वो 26% के करीब है। इसमें अहम बात यह है कि जो रजिस्टर्ड ब्रांड है उसमें दो तरह के हैं। एक जो कि हम समझते हैं कि टैक्स पे नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो बहुत कम कीमत में बिक रहे हैं। यानी अगर एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और सब कुछ उसमें मौजूद है लेकिन प्राइस बिक रहा है, तो दैट मीन्स कि उसमें कोई गड़बड़ है। तो आगे चलिए। जो इंडिकेटर्स थे वो ये थे। पहला तो हमने देखा ग्राफिक, उसमें ग्राफिक्स हैं नहीं, गूगल हो गया। तो सबसे पहला जो आसान नुस्खा था वो तो ये था कि जिन ग्राफिक्स नहीं थे, अलग कर लिए, वो सेट में चले गए। उसके बाद ग्राफिक्स थी, ये इशू था कि ग्राफिक्स तो मौजूद है लेकिन कुछ भी टेक्स्ट स्टैम्प्स थी और कुछ भी नहीं थी। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट स्टैम्प को इंक्लूड इसलिए नहीं किया था कि उस वक्त शुरू हुआ था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, लेकिन कि ट्रांजिशन में था, जो कि अब पिछले महीने लिस्ट अपलोड की है और कहा है कि हमने अब तमाम इंडस्ट्री पे कर दिया है। तो इसका मतलब अगला सर्वे इंशाल्लाह अगर हम करेंगे कभी साल 2 साल बाद, तो फिर जिंदगी और आसान हो जाएगी। स्टैम्प है तो लीगल नहीं, ट्रांजिशन है तो इसमें जिसमें स्टैम्प तो नहीं है लेकिन ग्राफिक्स, इस बात का इम्कान मौजूद है क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उस कंट्री में अगर वहां नहीं है या पार्शल है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो टैक्स पेड है। तो लिहाजा उसके लिए हमने किया कि अगर विदाउट स्टैंप है लेकिन उस पर ग्राफिक्स भी हैं, अगर वो मिनिमम प्राइस से नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो नॉन टैक्स पेड है। हमने इसलिए और इंक्लूड किया कि अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, if it's not registered with FBR, that is illegal tax paid, चाहे उसमें ग्राफिक्स बने। ऐसे ब्रांड्स हमने देखे, एटलीस्ट 12-13 ब्रांड्स के करीब ब्रांड ऐसे हमें मिले हैं जो कि ब्रांड्स थी लेकिन FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसको हमने कोशिश की है कि अपने एस्टिमेट को करीब से करीब तक लेके जाए, हकीकत से ऐसा ना हो कि एस्टिमेशन में चले जाएं। तो इसलिए हमने वो ब्रांड जो कंप्लायंस के साथ थे लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने निकाल दिया कि ये जो है वो इलीगल। कंप्लायंस में हमने देखा कि 79% ऑफ पैक्स जो थे कंप्लायंस थी, या तो टैक्स थी, टैक्स टाइम ग्राफिक्स जो है वो मुकम्मल थी। बताया कि इन 79 में वो भी शामिल है जो कि अनरजिस्टर्ड है या जिसको किसी न किसी हवाले से नॉन टैक्स पेड कहा जा सकता है। आगे चलिए। टैक्स स्टैम्प्स हमने देखी 57%। अच्छा, 57% ये सारे वेटेड एवरेजेस हैं। टैक्स ये 100 में से 57 जो है वो हमें सैंपल वेट दिए गए थे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, क्योंकि अगर आप अनवेटेड तो आपको तकरीबन 70% टैक्स में स्टैंप्स मिली। लेकिन चूंकि एक सिस्टमैटिक सर्वे था साइंटिफिक लिहाज से, तो पॉपुलेशन के वेट्स भी आमतौर पर जो एरियाज हैं उनका वेट ज्यादा है और अर्बन एरियाज का वेट कम है, इसलिए कि पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ तकरीबन 65% तो रूरल है। तो जब हम उससे वेट करते हैं तो उसके बाद के ये रिजल्ट्स हैं। तो एवरेजेस ऑफ पैक्स तो बहुत अच्छी सूरत नजर आती है। कुछ 80% पैक्स आपको जो मिले, जो हमें 6,600 पैक थे उनमें से 70-80% जो है उनके वो थी, लेकिन आफ्टर गिविंग द सैंपल वेट्स ये 57% आए हैं। और जो हमने सर्वे किया था उसमें हमें 48% मिले थे। तो हैज बीन, लेकिन इट्स नॉट अ बिग सेलिब्रेट
इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अगर बाकी आप कह लें कि 40% पे नहीं है, तो ये भी इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। आगे चलिए। ये रिजल्ट है कि जो इंडिकेटर्स बताए थे कि स्टैम्प्स है, ग्राफिक है, और फिर अगर वो ग्राफिक है लेकिन रजिस्टर्ड में, तो उनको निकाल दिया। दूसरा हमने देखा कि जो सब कुछ मौजूद है उनका, लेकिन दे आर सोल्ड प्राइस, जो कि 162 पॉइंट समथिंग है। तो तब इनिशिएट में किया, तो ये जो फिगर आया है, ये 35% का आया है। तो अगरचे इंडस्ट्री के करीब से तो बहुत कम है, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि 33 के बीच में, इस 2 साल में कुछ ऐसा तूफान आया कि ये बढ़ गई होगी। तो ये तकरीबन उसके करीब है। आप कह लें 33-35, इतना थोड़ा बहुत फर्क तो है। बट स्टिल आई वांट टू से कि ये बात तो दुरुस्त है कि ये फिगर इंडस्ट्री के क्लेम से आधी हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत सिग्निफिकेंट है। हम इसमें खुशी की बात नहीं है कि हम कहें कि नहीं ये 60 नहीं है, ये तो 30 है। सवाल ये 30 भी क्यों है? तो ये जहन में रखनी होगी बात। आगे चलिए। बस फाइनली जो है वो जो खुलासा है मेरी बात का, एक तो ये है कि जो नॉन टैक्स पेड की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा बहुत 2 परसेंटेज पॉइंट का फर्क हुआ है। जो बेहतरी आई है वो टैक्स स्टैंप्स में आई है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब एफबीआर में कल एक सेमिनार में था अमृत फाउंडेशन के, तो वहां जरूर कुरैशी भी मौजूद थे कल यहाँ पर, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ट्रैक एंड ट्रेस वाले। तो उन्होंने कल बताया कि अब हमने 100% जो है वो इंडस्ट्री को कवर कर लिया है। तो मैंने कहा इसका मतलब अगले सर्वे में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारी जिंदगी आसान है, हमें को ज्यादा तकलीफ करनी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जो प्राइस फैक्टर है वो बहुत अहम है। कि आपको प्राइस मालूम हो कि इस पे अगर 180 लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बिक 120 का रहा है, तो देन ये आपकी बात है कि इसमें जो है वो कंसर्न में दूसरी समझता हूँ। एक चीज को और आगे आना चाहिए कि जो नॉन टैक्स पेड सिगरेट है की दो कैटेगरी बनाएंगे। स्टिक है, स्मगल्ड है। जब किसी को नहीं पता कि स्मगल्ड है, फर्ज करें पाइन या एक और कौन सा, एक पाइन है और एक प्लाटिनम, जो कि बहुत ज्यादा हमें मिले। अच्छा, जब किसी को बता सकता है कि ये मैदान में बनते हैं कि यूनाइटेड अरब अमारात में बनते हैं, बस। चूंकि उसको ग्राफिक नहीं बनी होती, तो हम से कह देते हैं ये स्मगल्ड है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि स्मगल्ड, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। फिर वो वसीम, यू कैन करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, फिर वो चला जाता है कस्टम इंटेलिजेंस की तरफ। वो सारा फिर वो टैक्स कंप्लायंस वगैरह से हटके बात वो चली जाती है कि ये तो स्मगलर है, ये जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस का काम है, वो देखेंगे, बाकी लोग नहीं देख सकते। है ना? कि जो सिगरेट नॉन टैक्स पेड है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो स्मगल्ड है, उसकी ट्रीटमेंट एक ही होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे जाइए। रिकमेंडेशन जाहिर है वो सब मेरे ख्याल है इस पे एग्री करेंगे। 2024 में कहा था फाइनेंस एक्ट में कि शॉप को सील कर दिया जाएगा अगर वहां पर नॉन टैक्स पेड सिगरेट या स्टैंप के बगैर सिगरेट को बेच रहा है, तो शॉप को सील कर दिया जाएगा। लेकिन लगता ये है कि उस पर मजीद कोई ऐसी जो उसकी जो भी उसका प्रोसेस होता है, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब बैठे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। ये सिंध के फोकल पर्सन है टोबैको कंट्रोल सेल के। बात बड़ी नहीं है, इसलिए कि आज तक शॉप जो है सील कर दी गई हो। और ये इतना आसान काम है, इसलिए कि चर्च तो नहीं बेच रहा ना, छुप के बेच रहा होगा। ये तो सिगरेट बेच सबके सामने बेच रहा है। इसमें तो कि आपने, आपको क्या intelligence चाहिए? सामने रखे हैं सिगरेट, आप करने से मुझसे। इसमें हमारा सजेशन रिकमेंडेशन ये है कि जो इससे सिर्फ उसकी आगे प्रोसीजर होता है कि एक एक्ट में आपने ये डाल दिया, अब उसको फिर आगे कॉन्डक्ट हो जाएगा, उसके कोई रूल, उसके कोई एसओपी बनेगा, इख्तियार किसको देने हैं किसको नहीं देने होना चाहिए। ये है कि जो हम इससे पहले भी कहते रहे हैं कि पिछले 2023 के बाद से अब तक जो है वो फ्रीज हो गया है एफईडी में। इस बजट में एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो
जितनी साल पहले थी उसके मुताबिक जो है वो हमारा एस्टिमेट था कि 40 रुपए पर पैक जो है 39 रुपए पर पैक, विच इज नथिंग, 2 रुपए पर सिगरेट अगर आप टैक्स बढ़ा दें तो कोई इतना बड़ा नहीं है। ये सिर्फ हमारा लीस्ट हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि टैक्स पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी दुरुस्त होना चाहिए। मतलब इसको हम फॉर गारंटेड नहीं दे सकते कि 2 साल पहले भी 33% थी और अब भी 35% है और 4 साल बाद भी 30% होगी। सो दैट शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Asif Iqbal Saab. We joined Mr. Shahzad and Wasim Saloon Saab from WHO. I would now request Dr. Wasim for his presentation, but let me also request that we are running short of time, so if you'll keep it to 5 minutes or so. अब आगे चल पड़ी है। Okay, so I'm going to talk about taxation and analysis of the Pakistan's Finance Act, which was 20 last year, 2024-25. I have no conflict that situations if industry whose interests are not aligned with public health. So as of the taxes for the reduce prices, reduce taxation, and unfortunately, countries this increase the population and rest everything is regulated. Article 6 of the FCTC desires 70% of the price should be tax in that is 51%. In countries it's 59.1%, and how the taxation average is 67%. Pakistan has 54.8%, of which 60.3% is on the and 52.6% is on the economy band. Just a few words about single tax scorecard. And it shows just a four aspects, that is price, affordability, share of tax, and tax structure, and they award marks to only 5. So higher the marks, the better it is. Here is the list of the that is Eastern Bilateral. Is at 80%, which is like third from the bottom. And interestingly, the high confidence like this time, as far as extension is concerned. Next. As far as extension is concerned. Next. South Asia is concerned, is at the bottom. Pakistan and the price of the brands and the Zara are taken from the show and this and the taxes 6% as far as concerned, and prices was down to 0.7 million. Again, as far as the prices of the most
are concerned, and it's at the same level as Bangladesh. Affordability, um, the, so that is, if you 1,006, how much of your annual income spend? Percent of and per capita income, and in 5%. This is just a massive increase. There is nothing substantial happening here. Again, marks all of because there was in the last two consecutive scorecards. Excise the taxes was $15 and for and in it's $6. That's in the South Asian region. Okay, this is from the picture, and I just wanted to highlight that 16, the percentage contribution 6% and 6.2%. So let's in taxation is 10 years. Then the threshold, okay, so finance bill, which was the first item, threshold price. The threshold price is the price the economy selling and not that the so one is taxes place. Threshold price will raise from 80 to 50. That is 70 days. This was a margin. So the price of taxes. And that is what they did. They changed of tax without taxes to the government and gone about 20, 30, 40 rupees. Once tax team ran, this was and so this also gives incentive shift of years. I just highlight this. That's the sell change the Benson Hedges. This happened in the in fact tax when the tax was applied. Selling 50, 60 states. So estimated Benson and Hedges market price, market share is almost 1%. So that means they are selling 600 million sticks or 30 million packs. And the current price, and I got this photograph yesterday, and it's 283 here. So that means that, and the minimum price, because this was a premium brand cigarette, it's supposed to be 580. Revenue loss per pack is 229, or in 1 year, this only one brand has incurred a loss of 687 billion to the Pakistan's revenue, or which is 24.5 million US dollars. That is just caused by change of brand tier in case of Benson and Hedges. Next item was that unregulated nicotine pouches were taxed at the rate of 1,200 rupees per kg. So our concern is that pouches, they were taxed. How they were taxed? Were they taxed as a drug? Were they taxed as a tobacco product? Because 1,200 per kg is an arbitrary price. I mean, there is no logic for putting this thing. But we also observed that the tobacco industry has been promoting Burley tobacco in KP, and Burley is the best source of nicotine of all the tobacco varieties that they are growing. So basically, the tobacco industry is asking the farmers to grow Burley so that they can have more
of the nicotine for the nicotine pouches and other nicotine products. It's a dangerous and poison. It's a dangerous poison and prescription-only drug declared in Australia, Brunei Darussalam, Czech Republic, and Singapore. Another tax which has been imposed on these e-cigarettes and e-liquids since 2020, they are being taxed under the Customs Act of 1969. The importers claim to pay 20% customs duty, 29% regulatory duty, 18% sales tax, 6% advance customs duty, 3% advance sales tax, and over that FED also. They claim that they are paying 76% taxes on importing these. Now, please remember that these products are not regulated as far as Ministry of Health is concerned. And we also observed that in Karachi, at least one shop has been selling these e-cigarettes since 2009. Another consignment was caught in 2016. That means they've been selling for over 10, 15 years now. Consignment worth rupees 140 million was caught a month ago. And our major observation is that heated tobacco products, which are regulated by the Ministry of Health under an SRO, they are not being taxed. Whereas the vapes, which are unregulated, and the pouches also, they are unregulated and they are being taxed. The next item that was taxed during the last budget was that acetate tow, which is used for cigarette filters, that was taxed at 44,000 rupees per kg. And there is already a tax on of almost 80,000 rupees per kg on filter rods. Now, tobacco industry was jubilant about this because they think that by raising the price of the filters, those small producers or manufacturers or local manufacturers will not be able to buy the filters. This, I'll just, for your understanding, I've displayed this picture here. So the filters, when they were introduced by tobacco industry in 1976, they're supposed to have ventilators, vents. You can see these white vents around the filter so that when the smoker sucks in the smoke, along with that, the fresh air also goes into the smoker's throat and doesn't hurt the throat. This was the original science behind this filter. But SEPA carried out a survey of 109 different brands a while ago, and we found zero compliance on this. So that means that they are putting up filters, but there are no vents in that. Asif Sab just mentioned about this next item, which was punitive action against the retailers, that they are supposed to shut down the shops and confiscate all the products. So Internal Revenue Enforcement Network data from October 2024 to March 25 shows that they conducted 218 raids across Pakistan and almost 1.7 billion sticks were confiscated, reclaiming an excise duty of almost 1.209 billion Pakistani rupees. Just a few recommendations, as Abid Sulai Saab and Asif Saab also said, that we do not need a tier system. We need a specific single tier because there is no difference in the cigarettes. They are coming from the same crop. Implementing progressive taxes is very important in the taxation policy so that they become less affordable over time. Since the last tax increase on the cigarettes, कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ा. The cigarette prices have actually they've become more affordable. क्योंकि inflation इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपने tax नहीं बढ़ाया, prices ऊपर नहीं गई, तो cigarettes are more affordable now. There is also a need to apply health-specific levies. Then, because Pakistan is losing 715 billion rupees per year on the tobacco-related illness. Next. As desired by Article 15, or अभी आसमान बताया है कि they have registered almost 75 companies, and we hope to see that track and trace becomes effective. My repeated observation is that जो track and trace है, जो export cigarettes हैं, उनके ऊपर नहीं लगाया जाता. And this was the sole reason of failure of track and trace system in Ecuador. So we need to make sure that every single cigarette which is churned out of
a cigarette factory that has a track and trace system, whether it's being exported or it is being used inland. और पॉलिसी स्टैंड रिगार्डिंग ई सिगरेट्स एंड निकोटीन हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है. टोबैको कंट्रोल एडवोकेट्स वी आर एडवोकेटिंग फॉर अ बैन ऑन दीज सिगरेट्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स, लेकिन ना बैन लगाया है ना इसको रेगुलेट किया है, बट दे आर बीइंग टैक्स्ड. सो मुझे ये लगता है कि ये इंडस्ट्री की एक टैक्टिक्स है कि पहले आप चीज़ों को टैक्स करा लो और उसके बाद रेगुलेट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे. तो रिडक्शन ऑफ टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर जो 50 रुपीज पर केजी केपी ने बढ़ाया था सेस डेवलपमेंट सेस उसके ऊपर क्रॉप के ऊपर बढ़ाया था, वो बाद में टोबैको इंडस्ट्री प्रिवेल्ड एंड दे गॉट इट रिड्यूस्ड बाय 50% और अब ये 25 रुपीज पर केजी है. एंड प्लीज रिमेंबर दैट दिस वाज 1996 से लेके 2022-23 तक ये 3 रुपीज पर केजी था. तो इन लोगों ने ब्लू वेन्स और हमारे बाकी जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं पेशावर में, उन्होंने दे वर्क वेरी हार्ड और इसको 50 रुपीज कराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि इंडस्ट्री का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सो इट वाज ड्रॉप्ड बाय 50%. And I thank you very much for your patient listening. Thank you. Thank you, Dr. Wasim, for this very interesting presentation. And we are honored to be joined by Dr. Shabana Saleem, who is the Director General Health. I would now request Dr. Wasim Saleem if he can come up to this stage for presentation. Assalamu alaikum. Thank you, SPDC and SDPI, for inviting WHO for their views about industry tactics. First of all, let me brief you about WHO's role. WHO's one of the major role is to provide technical support to the government, FPR, Ministry of Health, and to the Bloomberg BI partners. And it's very happy. I must say that we are very happy and glad to see that the civil society is using WHO's work to generate evidence and present these evidence to the community for raising the taxation and highlighting industry's tactics. So one of the major things, despite the heavy health burden on the economy, one of the major reason that what we are facing. So on the other side, taxation, there is no change in tobacco taxes since February 2023. Although during this time period, there is 26% inflation. And on the other side, industry has raised the prices of their products 3 times during this time period, but FPR is not able to raise taxation or taxes on the tobacco, cigarettes especially. Next slide, please. So it shows that in 2022-2023, we have 3 times in a year consecutively FPR has raised the taxes, and collectively almost 200% FED rates were increased. But since then, there is no change in tobacco taxes. Next. Yes. While looking at this number, मुझे आज वो गाना याद आ रहा था, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से. But look at the real numbers at constant prices of 2015-16. तकरीबन FPR 114 बिलियन कलेक्ट करता था in 2015-16. फिर वो कम होता गया और आज भी हम 118 बिलियन पे ही खड़े हैं. नॉमिनली वो आपको जरूर नजर आएगा कि 297.8 है रेवेन्यू कलेक्ट हुआ लास्ट ईयर 23-24 में, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं इन रियल टर्म्स प्राइसेस को कांस्टेंट करके, तो आज भी हम वहीं पे खड़े हैं और आज भी हम वही बातें सुन रहे हैं जो 2018 में जब मैं नया टोबैको टैक्सेशन पर काम करना शुरू किया कि 3rd टियर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, रेट्स को कम किया जाए क्योंकि इलिसिट ट्रेड बहुत ज्यादा है. ये सब आर्ग्यूमेंट्स हम सुनकर टोबैको टैक्सेशन पर काम करना शुरू किया. नेक्स्ट प्लीज. सो जैसे कि नेक्स्ट प्लीज.
अभी वसीम जंजुआ साहब ने भी ये ग्राफ दिखाया। तो ऑल्दो विद ऑल दीज एफर्ट्स जो कि हमने अभी की, जैसे कि मैंने पीछे ग्राफ में शो किया कि आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां 15-16 में थे। तो दिस ग्राफ ऑल्सो शोज कि हम अपने नेबरिंग कंट्री से जब कंपैरिजन करते हैं तो हम आज भी पीछे ही खड़े हैं। नेक्स्ट, जस्ट लुक एट दिस नंबर कि आज हम लोग जो है वो तकरीबन $36 कलेक्ट करते हैं अगर आप तकरीबन 2000 पैक सोल्ड करते हैं, जबकि आप बांग्लादेश को ही देख लें, दे आर कलेक्टिंग $58। ठीक है, और ये सिचुएशन अब वर्स हुई होगी क्योंकि ये 2023 का कंपैरिजन है। हमारी कंट्री में टैक्स नहीं चेंज हुआ, बांग्लादेश ने अभी बहुत प्रोएक्टिव टैक्स चेंजेस लाए हैं। नेक्स्ट, जो बात मैंने स्टार्ट में की कि फरवरी 2023 से जब टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आया, तो अगर आज आप सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करें अपने लास्ट 2 इयर्स को, तो आपके एफईडी रेट्स को कम से कम 127 रुपए पर पैक फॉर द इकोनॉमी और 416 रुपए तकरीबन फॉर द प्रीमियम ब्रांड्स होना चाहिए in order to ensure the same level of real revenues which FBR was collecting in 2023. Next. So now let's move to tobacco industry tactics. Tobacco industry tactics बहुत सी tactics use करता है to undermine tax policy. Next. Let's start this undermining. This is प्लीज रिमेंबर कि एफबीआर को और टैक्स टोबैको इंडस्ट्री को एडवांस में पता होता है कि कब टैक्स पॉलिसी चेंजेस आनी है या कब ट्रैक एंड ट्रेस इंप्लीमेंट होना है। हमारे मुल्क में ट्रैक एंड ट्रेस को इंप्लीमेंट किया गया ऑन 1 जुलाई 2022 को। उससे बिफोर दैट अगर आप देखें कि इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्शन को तकरीबन 1 बिलियन पर मंथ इंक्रीज किया है, और जिसका मकसद ये था टू अंडरमाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, इसे पोर्ट्रे करना कि ये एक फेलियर है, वी आर नॉट एबल टू कर्ब द इलिसिट ट्रेड। और आप वो जो 12 बिलियन स्टिक्स ऑलमोस्ट उन्होंने एक साल में एडिशनल प्रोड्यूस की, दे आर एबल टू डंप दोज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। देन और उसी से वो 2023-24 तक सरवाइव करते रहे हैं, क्योंकि हमने जब 2023-24 में मार्केट सर्वेस किए फॉर इलिसिट ट्रेड, शहजाद आलम साहब ने एक स्टडी करवाई इलिसिट ट्रेड पर WHO में, तो उसमें भी फाउंड मोस्ट ऑफ द पैक्स बाय दीज मल्टीनेशनल्स प्रोड्यूस्ड बिफोर फरवरी 2022, क्योंकि उस पर जो प्रिंटेड प्राइस थी वो पुरानी मौजूद थी। So industry able to sell those old prices, old price packed at a double prices for the 2 years. वो जो additional production की गई। Next. On the other side, sugar एक ऐसा सेक्टर बनता है जिससे हम टोबैको को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ज्यादा मेजॉरिटी लोकल प्रोडक्शन की है, इंपोर्टेड सेक्टर नहीं है, एज कंपेयर टू कॉन्ट्रेरी टू फर्टिलाइजर या सीमेंट जहां पर इंपोर्टेड ज्यादा मौजूद है। ऑन दी अदर साइड शुगर सेक्टर ने तकरीबन 39% का ग्रोथ दिखाया है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस, जबकि टोबैको सेक्टर में वी आर सीइंग कंटिन्यूअस डिक्लाइन। उसकी एक फैक्टर, वन ऑफ द मेजर फैक्टर के प्राइस में बड़ा शार्प इंक्रीज आया था, विच डिस्करेज द डोमेस्टिक डिमांड आल्सो, जो कि एविडेंस है हमारे पास। थैंक यू। नेक्स्ट, exaggerating the illicit trade numbers. Next. Based on 2015-16 Pakistan Bureau of Statistics number, हमने सिर्फ एक कोशिश की थी to find out कि इनफॉर्मल सेक्टर जो कि आपका इलीगल सेक्टर है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, उसका कितना मैग्नीट्यूड है। What we have found कि तकरीबन 8.7% शेयर है इनफॉर्मल सेक्टर का इन टोबैको सेक्टर जो टोटल प्रोडक्शन है, लेकिन एक बहुत बड़ा contributing factor at that time was under reporting by the large manufacturers जो तकरीबन 17.6% था। अब आफ्टर ट्रैक एंड ट्रेस इंप्लीमेंटेशन वी डोंट नो, लेकिन वी आर होपिंग कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जल्द से ही अपने नए सर्वेस कंडक्ट करेगा। वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू सी कि अब साइज कितना चेंज हुआ है इन केस ऑफ टोबैको। नेक्स्ट, so based on WHO study we found कि 23% एक्सटेंट है इलिसिट ट्रेड का विद इन इस्लामाबाद। हमने सिर्फ ये इस्लामाबाद के लिए की थी स्टडी,
और इसमें भी एक मेजर कंपोनेंट वो स्मगल्ड सिगरेट का है। स्मगल्ड को भी आप दो में डिवाइड कर दें, जो टोबैको इंडस्ट्री है वो दो में से एक पोर्शन के लिए ज्यादा कंसर्न है, जिसमें कि जो इकोनॉमी ब्रांड में है। लार्ज प्रीमियम ब्रांड्स की स्मगलिंग उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल डनहिल या गोल्ड लीफ या Marlboro, they are produced by their international partners और वो मार्केट में डंप कर रहे हैं, so they are not worried about those, लेकिन उनका मेन कंसर्न ये इकोनॉमी ब्रांड्स का है। नेक्स्ट प्लीज। मिसलीडिंग द कॉज ऑफ इलिसिट ट्रेड। जी नेक्स्ट। जी, इंडस्ट्री का आर्ग्यूमेंट ये है कि आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो आपका प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द इकोनॉमी और प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो सॉरी प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द लीगल एंड इलीगल विद इन इकोनॉमी वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से इलीगल के लिए इंकरेजमेंट होगी टू सेल इन द मार्केट, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। हमने यही एक्सपीरियंस 2017 में किया था। विद दिस इंटेंशन हमने 30th इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें टैक्सेस को सब्सटेंशियली डिक्रीज किया गया फ्रॉम 40% टू 28%, जिसके नतीजे में जस्ट लुक एट दिस ग्राफ कि 15-16 में हमारी प्रोडक्शन 53.5 थी, रेवेन्यू 90 बिलियन था। 16-17 में प्रोडक्शन गिरी 34 बिलियन। इंडस्ट्री ने पैनिक क्रिएट किया क्योंकि एफबीआर के रेवेन्यूज फॉल कर गए थे, 66 बिलियन पर आए, एंड इंडस्ट्री क्लेम कि जी ये सारा इलीगल सेक्टर है और आप टैक्सेस को कम कर देंगे, टैक्स बेस बढ़ जाएगी और वी आर एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। व्हाट हैपेंड कि इंडस्ट्री की प्रोडक्शन रिकवर कर गई, 53 से 59 बिलियन पर आ गई, लेकिन लुक एट द एफबीआर रेवेन्यू, दे वर स्टैग्नेंट एट 66.9, और 19-20 तक दे वर कंटिन्यूअसली स्टैग्नेंट, और हम ये जो 15-16 का लेवल था उसी को अचीव नहीं कर पा रहे। सो देन एफबीआर रियलाइज देयर मिस्टेक, और उन्होंने उसके ऊपर जो है अपना रिकवर किया, एंड वी शिफ्टेड बैक टू 2-tier सिस्टम। नेक्स्ट। हाँ, तो आज भी हम वही पोजीशन पर मौजूद हैं। जस्ट लुक एट दिस नंबर इन 22-23 42.8%, 42.8 बिलियन का प्रोडक्शन थी। एफईडी रेवेन्यू वर अराउंड 142 बिलियन। 23-24 में रिमेंबर के फरवरी 2023 में हमने टैक्स को बढ़ाया था, लेकिन हमारी प्रोडक्शन में कमी आई बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइसेस, डोमेस्टिक कंजम्पशन में कमी आती है। और दूसरा कि एफबीआर इंडस्ट्री ने फ्रंट लोड की हुई थी कुछ प्रोडक्शन 21-22 में, लेकिन लुक एट द एफईडी रेवेन्यूज कि उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। वी वेंट फ्रॉम 142 बिलियन टू 237 बिलियन विद इन अ ईयर, और आज इस साल वी आर एंटिसिपेटिंग कि हम कुछ 36 बिलियन पर ये साल क्लोज करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक 26 बिलियन की प्रोडक्शन है, एंड वी एंड अप विद अ रेवेन्यू ऑफ 216 बिलियन। इसकी क्या वजह है, आई जस्ट एक्सप्लेन, लेकिन ऑल वी हैव टू द की मैसेज कि हमें वो पुरानी गलती जो हमने 17 में की थी वो रिपीट नहीं करनी। नो नीड टू रिड्यूस टैक्सेस, इंक्रीज द टैक्स रेट्स फर्दर, ताकि आपके कंजम्पशन भी कम हो और ऑन दी अदर साइड रेवेन्यूज में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट। सो दिस is a study done by the WHO कि जो Benson and Hedges पर misleading facts इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया, एक इलीगल मूव किया गया। रिस्ट्रिक्शन 1 rather than रिस्ट्रिक्शन 2, रिस्ट्रिक्शन 1 is actually जो कि इंडस्ट्री को स्टॉप करती है फ्रॉम शिफ्टिंग और रिड्यूसिंग द रिटेल प्राइस ऑफ एनी पैक, विच इज अ सिंपल केस, लेकिन इंडस्ट्री ने रिस्ट्रिक्शन 2 को यूज करते हुए वो किया, एंड एफबीआर हैज issued a show cause to industry PTC on this, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ उस पर नहीं हो सका। वो पैक आज भी मार्केट में मौजूद है। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन आवर सिचुएशन एंड कंसर्न्स कि एक इंडस्ट्री खुल्लम खुल्ला एफबीआर के लॉज को कोई वैल्यू नहीं करता, अपनी मर्जी से वो प्राइसेस को चेंज करता है, और जब उन्हें शो कॉज भी मिल जाए उसके बाद भी वो दीदा दलेरी से प्रोडक्शन करते रहते हैं। इट शोज कि उनको इस एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्समेंट का कोई खौफ नहीं है। दूसरी तरफ जो ज्यादा कंसर्निंग बात है कि अब बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल नेक्स्ट ईयर यू कैन फाइंड कि गोल्ड लीफ को शायद वो स्विच बैक कर दें, बिकॉज वी बिलीव कि इसको उन्होंने एक लिटमस टेस्ट के लिए देखा था कि हाउ एफबीआर विल रिएक्ट। So FBR failed to implement their mandate,
तो अब वो शायद नेक्स्ट ईयर इसकी बेसिस पर किसी और ब्रांड के साथ ये किया जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसके ऊपर वी आर सेइंग WHO believes कि दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर द सिंगल टियर सिस्टम, ताकि एक दफा उसमें इंडस्ट्री को भी ये है कि वो भी अपने इकोनॉमी और प्रीमियम ब्रांड की प्राइस सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सो नाउ जस्ट लुक, इस साल जब आपकी रेवेन्यू प्रोडक्शन में भी तकरीबन 13% की ग्रोथ है, लेकिन FBR के रेवेन्यूज में इजाफा नहीं है। उसके पीछे भी इंडस्ट्री की एक टैक्टिक्स है, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने फ्रंट लोडिंग की है प्रीमियम ब्रांड्स की। लास्ट ईयर में उनकी बिकॉज ऑफ दिस फ्रंट लोडिंग they give revenue more than their anticipate their जो उस वक्त की liabilities है उससे ज्यादा। क्यों? नेक्स्ट स्लाइड। Last year, FBR was anticipating 205 billion का revenue collection in their budget documents, but they end up with 237 billion. यानी revenues में growth ज्यादा आई as they are anticipating. Next, और उसकी मेन वजह इस ग्राफ में मौजूद है। अगर आप देखें कि एवरेज क्वार्टरली ड्यूरिंग जुलाई टू मार्च, जो ब्लू कलर की बार्स हैं वो दिखा रही हैं कि फर्स्ट 9 मंथ में क्वार्टरली प्रोडक्शन। तो फर्स्ट 9 मंथ में इंडस्ट्री ने कुछ 7 बिलियन स्टिक्स ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस किए फॉर इकोनॉमी और फॉर प्रीमियम 1 बिलियन। लेकिन लुक एट द लास्ट क्वार्टर में उन्होंने प्रीमियम की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की 3 बिलियन की। लास्ट क्वार्टर में दे हैव प्रोड्यूस 3 बिलियन स्टिक्स फॉर द प्रीमियम ब्रांड, जिसकी वजह से FBR के रेवेन्यूज उनकी एंटीसिपेशन से ज्यादा रहे। अब जब लास्ट ईयर FBR के रेवेन्यूज और प्रीमियम ब्रांड ज्यादा प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो दे आर एबल टू डंप इन द मार्केट, क्योंकि लास्ट ईयर भी रूमर्स ये थे कि शायद टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा, लेकिन उस वजह से आखिरी क्वार्टर में बिफोर द बजट दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड एंड दे एबल टू sell these brands in the market after in 24-25। इस साल इसी वजह से हमारे रेवेन्यूज जो FBR का तखमीना था 324 बिलियन का, वो थोड़ा एग्जैजरेटेड नंबर था, एम्बिशियस था थोड़ा सा, लेकिन उसको अचीव नहीं किया, जस्ट टू क्रिएट अ पैनिक विद इन FBR कि जी आपके रेवेन्यूज नहीं गिरे और देयर इज अ सिचुएशन लाइक लेफर कर्व, बट दिस इज नॉट ट्रू। द रेवेन्यूज आर नॉट promising as they should be, because the industry has reduced the production of their premium brands. अगर FBR able to sustain this tax rates और अगर अपने tax rates को inflation adjustment के तहत बढ़ा भी लेता है, तो we are sure कि next year FBR के revenues भी ज्यादा होंगे और कुछ production और domestic consumption में भी कमी आएगी। Thank you. So I'll stop here. So we are here for answering your questions. Thank you, Mr. Wasim Salim, for your very enlightening presentation. Now I would request Ms. Sania Ali Khan to please come here. We have been speaking about taxation so far, and of course it's a very grave matter and a very urgent one as well. But there are some things that I wanted to highlight beyond taxation that the tobacco industry does, various ways in which it interferes with our system. Yeah. So what is tobacco industry interference? I think a lot of us already know this. Tobacco industry interference, it includes any kind of efforts जो tobacco industry करती है, जिसकी वजह से या वो डिले करें कोई पॉलिसी को, किसी पॉलिसी डेवलपमेंट को, किसी किस्म का कोई भी एक्शन जो लेना हो, उसमें उसको मे बी इतना हार्श ना है, उसको डाइल्यूट करके वो आ जाए। And how do they do it? They have different tactics for it. They target legislations, they target different kinds of partners that already work, like उनको decredit करने के लिए, discredit करने के लिए। They also create misleading narratives, इस तरह की वो different surveys के साथ, studies के साथ आ जाएंगे, and we have been witness to all of these tactics already. Different CSR
कि इस तरह की एक्टिविटीज वो करेंगे, which is very unfortunate, क्योंकि एक तरह से हमें लग रहा होता है कि शायद ये कुछ ठीक कर रहे हैं, हमें से मुराद जनरल पब्लिक, not us in the room present here, कि शायद कुछ ठीक कर रहे हैं, but at the same time, whatever they do in the CSR, it is at a very huge cost. जितना वो शायद वापस दे रहे होते हैं कम्युनिटी में, उतना उससे बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा वो लोग ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं और मजीद पहुंचा रहे होते हैं. And of course, tobacco industry, they violate, like they're super against FCTC and they violate 5.3 in any way, in any where they can. Of course, हम सब यहाँ पे public health experts हैं, we already know कि इसके impacts होते हैं, whatever they do, जितनी भी इनकी interferences होती हैं, इनकी public health के ऊपर impact होता है, one way or the other. Policy makers को distract करने की कोशिश करते हैं, enforcement weak होती है, the implementation of life-saving regulations वो delay हो जाती है. Next. But it does exist in Pakistan in different forms. Apart from tax तो एक aspect है, very important one, of course, no doubt. But there are other ways as well. Media campaigns होती हैं, despite having an SRO, a TAPS ban, which is basically tobacco industry का TAPS ban on advertising, sponsorship, and any kind of promotion. उसके बावजूद there are media campaigns जिसमें अगर tobacco industry directly कुछ ना कर रही हो, तो उनके जो front groups हैं, जो उनके allies हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. And we conducted a study with SDPI on this, where one of the front group of tobacco industry, वो रेडियो के ऊपर बाकायदा चैनल, रेडियो चैनल के ऊपर, पाकिस्तान रेडियो के ऊपर वो बाकायदगी से हर वेडनेसडे को चला रहे होते थे 1 घंटे का प्रोग्राम, जिसपे वो प्रमोट कर रहे थे टोबैको हार्म रिडक्शन के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को. So of course that is alarming for us. फिर CSR activities, which is a disaster in itself, because like I mentioned before, जितना वो already they pretend that they're giving back, उससे कहीं ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहे हैं. और ये they have been doing the CSR activities in different forms. Health में भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, education sector में भी, और जब disaster relief में भी वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Next please. First example, Victoria Health Warning. I think we're all very well aware of it. How they tried to delay it. वो 2 दफा 2015-2018 के बीच में delay हुआ. Initially, we wanted to raise it from 40 to 50%, and then we wanted to raise it again from to 60%. Ideally, it was 80, but of course, because of the delayed the tobacco industry influencing the policy and delaying the whole process, वो 80 की जगह 60 was still somewhat achievement, but not what we were expecting. Next please. Example 2, CSR activities, and this is like a whole list. Different तरीकों से जिस तरह से वो लोग कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो these companies, they engage in medical and environment related initiatives. We have like a history of these. Next. Environmental impacts and CSR activities. उसके अंदर उनकी जो afforestation claims हैं कि Pakistan Tobacco Company, I'm taking names now, they claim to have planted 55 million saplings. Their sources, news sources, जो कि उनका claim publish कर चुके हैं. But what they do not publish, or what they do not tell us, is कि जो पूरा एक entire life cycle होता है एक single cigarette का, it requires 3.7 liters of water from like production till जब तक वो waste में चला जाता है. And also, of course, this contributes to deforestation as well, because जो भी आपकी cigarette बनती है वो पत्तों से बनती है, और वो जो पूरा paper होता है वो सारा process. And इसकी वजह से with approximately 60 billion cigarettes produced annually, तो खुद ही आप हिसाब लगा लें कि कितना पानी वो इस्तेमाल करते हैं और कितना ज़ाया हो जाता है basically. Water contamination अलग से हो रही होती है, soil and land contamination अलग से हो रही होती है, especially with the cigarette butts. This is again from a study which says approximately 16,917 tons of cigarette butts wind up as toxic trash just in Pakistan alone every year. It's an annual figure. Of course, apparently they think it's enough, but of course it is not, because it comes at a cost of water, soil, land, and of course air.
contamination. Next, please. फिर इनके health impacts होते हैं, different medical CSR initiatives they have. They came to do like BAT ने COVID-19 में fund में पैसे दिए थे. फिर PMI ने donation दी for pandemic relief. Again, it was a huge amount. But at the same time, if you guys remember, उसी time पे एक की बहुत वो चली थी, WhatsApp वगैरह हर जगह लोग बोल रहे होते थे कि जो स्मोक करते हैं उनको कोविड नहीं होगा. एंड इट वाज वेरी कॉमन. लाइक आई रिमेंबर छोटे छोटे मेरे भांजे भतीजे मुझे ये चीज बता रहे होते थे. तो अगेन आई मीन एक तरफ आपको रिलीफ के लिए इस तरह की चीज दे रहे हैं एंड देन एट द अदर हैंड यू आर एक्चुअली टेलिंग पीपल टू स्टार्ट स्मोकिंग. For healthcare facilities, they deployed different medical care units in Medan and Sawabi Charsadda to cater to local communities. और ये वो वाले districts हैं जहाँ पर tobacco growers हैं, tobacco farmers हैं. Again, this comes at a huge cost because इसकी वजह से जो deaths हो रही हैं around 164,000, and not just that, also because of the different kinds of chemicals and diseases that these farmers are exposed to, like gangrene and skin cancers. Next, please. Interference in policy consultations, of course, we've seen it over and over again कि जितना भी वो delay आता है या एक policy जो हम चाह रहे होते हैं कि वो उस तरह हो जाए, graphic health warning वगैरह, we wanted कि 80% हो, but वो नहीं हो पाई. Whatever, वो फिर भी 60% हो गई. इसी तरह की different other examples we have seen. Taxation included. Point of sale promotions, despite having tax ban, we still see point of sale के ऊपर promotions होती हैं, especially near schools. इसके अंदर Peshawar district में हमारे जो partners थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इसने with bringing in local enforcement के पूरे Peshawar में anyone under the age of 21, they were not allowed, they weren't eligible to buy cigarettes, nicotine pouches, but of course compliance lack kar rahi hai. And then youth engagement through different kinds of, ये भी इनका एक tactic है, marketing strategy है, directly नहीं आते, but unfortunately this is what they're doing. They're providing a platform for youngsters, for our youth, कि वो आए इस तरह की चीजों से. चवेलो साउंड स्टेशन हो गया, फ्यूज का कुछ एक फ्यूजन है कि फ्यूज है, उसका भी कुछ और they're coming up with a studio as well जहाँ पे गाना बजाना होगा. तो जो उनको पता है कि जो already addicted हैं वो तो हैं, but they're now preparing कि next generation आए और उनको करे. And these are all their these are all their ways of how they can conquer the market, how they can continue to have more and more non-ending line of or generation of customers. Next. We have global examples of tobacco industry interference. Philippines में the industry influenced their vape law by giving out money to campaign donations. In Uruguay, उसमें भी उन्होंने Philip Morris उन्हें actually sue किया था because Uruguay में उन्होंने graphic health warning को 80% कर दिया था और वो 6 साल की legal battle चली. And in the end उन्होंने Uruguay, the country, the state, it won the case, but वो 6 साल वो एक चलता रहा, which means कि they have so much money कि पूरे एक मुल्क के खिलाफ वो लोग लड़ सकते हैं. Next. Yeah, and how we can minimize the tobacco industry interference, we already know this. We need a full implementation in letter and spirit of Article 5.3. Uske baghair we cannot move ahead, we cannot move forward. I think Shehzad Saab would agree, and like उन्हीं की ये बताई हुई मुझे एक वो lesson है कि 5.3 is one of the most essential ones for us to be able to minimize. हम खत्म नहीं कर सकते मगर किसी न किसी तरीके से हम उसको minimize जरूर कर सकते हैं. Again, और वो 5.3 में ही बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, capacity building होनी चाहिए, training होनी चाहिए, transparency होनी चाहिए, and all that. Thank you very much. Thank you very much, Sania, for giving us the crux of the whole situation. I would now request Dr. Minhajul Siraj, the Executive Director of Syndicate Health, to share his insights with us.
Thank you very much, Wasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are very thankful to STPI for always taking the lead and giving us time and space and all the opportunities to express whatever we have for this our common cause, जिसके लिए हम सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं. Each one of the tobacco control advocate is doing a praiseworthy job. आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कभी सोचा भी नहीं था. We have come a long way, but still journey is not even halfway through. And I would like to say special thanks to the DG Health Saiba. हमने दिसंबर में उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो उनकी मेजर एक्सपर्टीज है डेवलपमेंट साइड की है उसके लिए टोबैको कंट्रोल का गवर्नमेंट का PC1 होना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच, दैट इज टेकिंग अप. और गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो है फॉर अ सस्टेनेबल टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स इन द नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल पे, वो उस के थ्रू जो है रहेंगी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर. हैपहैज़र्ड नहीं, वी विल सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट अपने नेशनल डोनर्स की तरफ सिर्फ नहीं देखेगी कि हम जो है इस एफर्ट्स को फंडिंग के कहाँ से आएगी, और इसके लिए जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो उसकी कंटिन्यूटी अवेलेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो कैसे रहेगी. जो आज की वर्ल्ड नो टोबैको डे की इस साल की थीम कह लें, उसके हिसाब से जो है टैक्सेशन ट्रिकी सब्जेक्ट है. आई रिमेंबर कि जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन जो टोबैको इंडस्ट्री से था, व्हेन आई वाज पोस्टेड टू द टोबैको सेल जनवरी 2011, तो मुझे एक मैसेज मिला अपने सेक्रेटरी ऑफिस से कि आप टोबैको इंडस्ट्री का एक वो है एड एक आना है FBR का इलीगल सिगरेट्स के लिए, और उसके लिए आप जो है वो फंडिंग अरेंज करके दें फ्रंट पेज पे लगवाने के लिए टोबैको इंडस्ट्री से. आई वाज परप्लेक्स्ड, ये क्या साइंस है. गवर्नमेंट FBR का की तरफ से ऐड आना है कि ये सिगरेट जो हैं ये इलीगल हैं, इनकी सेल पाकिस्तान में जो है ये स्मगल्ड है, इनकी अलाउड नहीं है, और उसके इश्तिहार के लिए पैसा जो है वो टोबैको इंडस्ट्री से लेके दो. गवर्नमेंट मुझे कह रही है. देन स्लोली ग्रेजुअली wise people like वसीम साहब और ऑल वासिफ एंड एवरीबॉडी, बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती रही, डेली बेसिस पे मिलती हैं. आज भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली. तो दैट इज हाउ टोबैको इंडस्ट्री वर्क्स. अनमास्किंग पील ऑफ होती रहेगी, आप पील हटाते रहेंगे, नई चीजें निकलती रहेंगी, बिकॉज उनका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, उनके फाइनेंशियल क्या कहने आप, उनकी वो हैं सारी चीजें जिनको उन्होंने अपने प्रोटेक्ट करना है, और उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी उनको प्रोटेक्ट करना है, और अदर गवर्नमेंट को हिट बैक करना है. आप और वो लोग जो पब्लिक हेल्थ से कंसर्न है, उनके सारी एफर्ट्स को आप किस तरह डैम्पन कर सकते हैं, किस तरह वो कर सकते हैं. वी नीड टू बी अलर्ट. और मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट, दोबारा एक ही रिक्वेस्ट मैडम DG साहबा से, होपफुली कि इस पे भी अब हम गौर करें. मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय है, दिस इज नॉट, अगर हम इतनी सारी जो मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर जितनी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर ऑल प्रेजवर्दी, बट वन सॉलिड कंक्रीट step should be to get a tobacco control authority at the national level. ये चीज जब तक हम इसको सारे स्टेक होल्डर्स को लेके नहीं बैठेंगे, जिसमें हमारे जो टोबैको ग्रोअर्स हैं, टोबैको इंडस्ट्री वाले हैं,
हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान टोबैको बोर्ड है, हमारे FPR वाले हैं, हमारे जो रेवेन्यू प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इसमें सारे स्टेक होल्डर्स पीस बाय पीस इन्वॉल्व हैं, अगर हम उन सब की रिप्रेजेंटेशन के साथ वन मेजर टोबैको कंट्रोल अथॉरिटी अगर हम बना लेते हैं, तो हमारा ख्याल है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए एक डायरेक्शन में उसको कर्टेल करने के लिए हमें एक स्ट्रीमलाइन चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। So thank you very much for your kind words and proposing Tobacco Control Authority. Without any further delay, I would now request Dr. Shabana Salim, who is the Director General Health, to please come over the stage, or please. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum to all guests. I think many of you were present in the morning session, which is conducted at the Ministry for commemoration for World No Tobacco Day 2025, as well as for inauguration of the toolkit, which we have finalized in consultation with all stakeholders. I guess आज काफी सारी बातें हुई, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं भी अर्ली आई के आई जस्ट वांट टू लिसन के टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, हमारी NGOs प्लस गवर्नमेंट, ये जो दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है SPPEI एंड SPDC, both are in the technical working group. और मेरा ख्याल है जो भी हमारी मीटिंग एक हुई थी उसमें ये लोग भी मौजूद थे, और उसमें पहली रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आई जस्ट वांट टू शेयर कि मिनिस्ट्री ने FPR एंड फाइनेंस को कम्युनिकेट कर दिया है अपनी तरफ से विद स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। तो टैक्सेशन को जो है वो दिस टाइम बजट डेज हैं, आप इसको जो है वो कंसीडर करें। और बिल्कुल ठीक आप लोगों ने कहा कि टैक्सेशन को इम्पोज करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट एन इजी टास्क, और इस पे मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। बट being representative from Ministry of Health, I assure you whatever we can do, we can approach to FPR, we can approach to Finance Division। हमें अपनी अगर हम भी खामोश हो जाएंगे तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग डिसअपॉइंट ना हो कि अगर हम एफर्ट सक्सेसफुल एट सर्टेन स्टेज नहीं हो पाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुदा न खास्ता फेल हो गए। यही चीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल इन वन डे। देखिए जहाँ पे भी जो है वो हेल्थ का मामला आता है तो पैरेलल आपके उसमें डिफरेंट हर्डल्स भी आती हैं। लाइक अभी मिनिस्ट्री एक और उस पर काम कर रही है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड टैक्सेशन, शुगरी ड्रिंक टैक्सेशन, इसके अलावा ट्रांस फैटी एसिड टैक्सेशन। बिल्कुल सिमिलर आप ही लोगों की तरह का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें भी सेहत के मामलात हैं और उसके हवाले पे भी मिनिस्ट्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भेजी हैं कि इसमें जो है वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर किया जाए। दुनिया के बेशुमार ममालिक में आप देखें, हमारे जैसे मुस्लिम कंट्री लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसने भी अपने शुगरी ड्रिंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैटी एसिड के बारे दे आर सो सेंसिटिव कि उन्होंने न सिर्फ ये कि टैक्सेशन, फ्रंट पैक लेबलिंग वाले इशूज उनको बड़ा कैटर किया और बहुत एड्रेस किया है। हम लोग भी जो है वो इस पर चाहते हैं कि अमल दरामद हो, बट हमने अपनी एफर्ट को कंटिन्यू करना है। अभी दिस टाइम देखें क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल मैंने एक दो सेमिनार और भी STPI रिलेटेड अटेंड किए और उसमें FPR के लोग आते हैं, एट दैट टाइम दे आर वेरी कन्विंस्ड कि यस इट शुड बी डन, लेकिन मे बी कुछ सिचुएशन इस तरह की होती हो, बट चलें
जितनी रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से गई है, अगर वो नहीं है गिवन सर्कमस्टेंसेस, एटलीस्ट कुछ तो ठीक है। तो दूसरा पैरेलल हमें जो एलिसिट टोबैको सिस्टम है, जिस तरह ड्रग्स का है, इसी तरह सिमिलर जो है वो इस पे भी फोकस होकर काम करने की जरूरत है। अब हमारी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप या टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो है वो बना है। इसमें ऑफ एंड ऑन ये मीटिंग्स अब कंटिन्यू होंगी। बीच में कुछ आई डू अंडरस्टैंड कि हॉल्ट हो गया था प्रोसेस, बट नाउ वी अगेन इनिशिएटेड एंड ऑब्वियसली ये अब हमारी जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी। इसके अलावा एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अक्सर डोनर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स की ये डिजायर होती है कि जी गवर्नमेंट कितना जो है वो इसमें एक्सपेंड कर रही है या कितने एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो दिस इज फर्स्ट टाइम कि हमने इस्लामाबाद लेवल पर एटलीस्ट PC1 जो है वो एक फॉर्मुलेट किया, और वो DBWP वाला हाई कॉस्ट का नहीं है, बट जस्ट टू शो दैट government is also interested in order to place amount while considering that this is very important subject and we have to implement in line with the activities of the PC1। और उसमें ये भी आप मद्देनजर रखें कि top competent authority they are agreed कि yes this is good कि हम अपना टोबैको सेल भी दोबारा रिवाइव करें, ICT लेवल पर फर्दर एक्टिविटीज भी करें। और आपने सुबह की मीटिंग में देखा ही होगा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, प्रोविंशियल सेटअप भी मौजूद था, ICT एडमिनिस्ट्रेशन के जो है लोग मौजूद थे। तो यही जॉइंट एफर्ट है। इसके लिए देखें हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो इट्स क्रूशल। स्कूल्स में आप देखें डिफरेंट टाइप के यंगस्टर्स को इस चीज से जो है वो सेव करना है, उनकी फ्यूचर हेल्थ के इश्यूज हैं। यही आपकी जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जाती है तो टोबैको, स्मोकिंग, ये जो है वो आपके मीडिएटर्स हैं इन ऑर्डर टू एनहांस द बल्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बाकी इसमें एक चीज लेट्स सी के मुझे नहीं पता आज के यहाँ पर FBR से कोई आए हैं या नहीं आए हैं या फाइनेंस से कोई मौजूद है। बहरहाल हमने जो है वो अपना कंप्लीट थॉरो जस्टिफाइड प्रपोजल FBR एंड फाइनेंस को कन्वे कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स उस हवाले में अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है तो डेफिनेटली ये सब आपकी एफर्ट और आप ही की उससे हम इस चीज को जो है वो अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा मैं एक ये भी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट ये मेरी कि मिनिस्ट्री के पास देखें, टू बी ऑनेस्ट हमारे पास और भी असाइनमेंट। आई डू अप्रिशिएट कि अगर आफ्ताब साहब शायद ना हो तो चीजें जो है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो खुद भी देख रहे होते हैं कि a lot of work lies on the desk of DG Health as well as the relevant directors। हमने इसके लिए जो है वो अभी नेशनल लेवल पर अपना एक कोऑर्डिनेटर जो है उनको भी मुकर्रर कर दिया है। चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएंगी। मेरी कोशिश है कि हम अपने मिनिस्ट्री में अपने सेल को जो है जो ऑलरेडी मौजूद था उसको दोबारा से रिवाइटलाइज कर लें, और PC1 को भी हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि प्लानिंग से हमें जो है वो फंडिंग सिक्योर करने में हम कामयाब हो जाएं। बाकी आई एम ग्रेटफुल कि ऑल द टाइम WHO इज विद अस, development partners are with us, and NGOs, INGOs, they all are working. And basically, they are just providing support to the government of Pakistan in order to craft this very, very important issue कि हम अपने लोगों को उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्मोकिंग के हवाले में जो है वो इसका सजेशन जो अब आपने देखा टूल किट में भी सजेशन गाइडलाइंस भी ऐड की गई हैं, और लॉट ऑफ SROs इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट ही शो करते हैं ना कि आपके कितने SROs राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो इसमें ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं। कभी हर्डल भी होती है, आई डू एग्री, ऐसी बात नहीं है, उनको कंप्लीट लॉ से करवाना सारा कुछ, और एक पूरा CCL CNN कैबिनेट एंड लॉट ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप लोगों ने जो है वो कंटिन्यू अपनी इसमें एफर्ट रखनी है, एंड आई होप कि विद योर जॉइंट एफर्ट
and organization like STPI and SPDC, of course, they are also working on this. So jointly, our effort will be fruitful and obviously will be resulted in order to achieve the proper SDG goal with regard to this issue. So thank you very much. Thank you, Dr. Shabana Singh, for your kind words. Without going towards the question and answer session, I would now request Dr. Sajid Amin, who is the Deputy Executive Director of SDPI, to please give a vote of thanks to all the participants. Sir, I would recommend if we can have question answer on the cup of tea. Okay, perfect. As you feel comfortable. So, do we have any questions? Please raise your hand and to whom you are asking that question. You can turn on the mic, sir. तो अभी जो उनकी टैक्टिक्स चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ट्राइंग टू फेल हमारा जो TDS है जो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसको कामयाब हम सबने करना है मिलजुल के और जो भी उनकी सपोर्ट हो सकती है मैं एक चीज से हाईलाइट करूंगा वैसे तो ज्यादा पॉइंट थे एक तो ये कि टोबैको इंडस्ट्री इसको जो पूरा फुल फोर्स के साथ जो काम कर रही है जो अभी हाईलाइट हुआ वो डेडिकेटेड स्मोकिंग एरियाज को दोबारा लाना उसका मिशन और वो पूरी कोशिश कर रही है कि हर जगह पे ये डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज बन जाए मिनिस्ट्री पे भी प्रेशर आएगा अगर नहीं आया कि ये एयरपोर्ट पे भी खोल दो और बस स्टॉप पे भी लें और कहीं और भी लें तो हमें इसके ऊपर पूरी आवाज उठानी थी बड़ी मुश्किल से ये आर्टिकल 5 में उसको जो थी डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया को बंद करवाया था बैन हुआ था उसी की वजह से WHO ने पाकिस्तान को ग्रीन किया था तो एक तो ये सारे पार्टनर जो मौजूद हैं बड़ी खोज हो चुकी है और दूसरी बात है कि हम आइंदा जो भी अपना इवेंट करें पहले थोड़ा सा हम ये देखें कि किस वेन्यू में जाए अगर वो वेन्यू वायलेशन का शिकार है कर रहा है वायलेशन तो वहां ना जाए और ये मैसेज होगा वास्तव इस होटल के अंदर भी सिगार लाउंज बोर्ड हमें नहीं इसके अंदर आना चाहिए अभी नहीं पता होगा आपको हम श्योर आपको नहीं पता होगा लेकिन आइंदा के लिए यहाँ और इस किस्म के और जो जगह है हम नहीं वहां जाएंगे बस मैंने इतना ही कुछ कहना है और जो फ्रंट ग्रुप्स हैं आजकल बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं और मैं समझता था कि मैं उसको हाईलाइट करेंगे वो शायद नहीं हो सकता बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो टोबैको इंडस्ट्री के फ्रंट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर भी है और बाकी जो पब्लिक है आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल आया हुआ होता है जो अनडू कर रहा होता है बहुत शुक्रिया Sir, you have very valid observation. Do we have any other question or comment? जी कमर सर please. While we are coming up with new things to do, doctor, two guidelines. That's the strategy है. Honestly, आपको ये वो लेना पड़ेगा because हम देखते हैं provinces के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो अमलन उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा. Despite कि वो पॉलिसी इंडोर्स डॉक्यूमेंट है और तमाम सूबों ने इंडोर्समेंट के बाद ही उसको पब्लिश भी किया गया था लॉन्च भी किया गया था लेकिन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना टाइम गुजरने के बाद सूबों ने उस पर क्या किया है तो आप अगर आपका ऑफिस उनके साथ फॉलो अप कर ले तो आई थिंक उनको थोड़ी सी यस थैंक यू वेरी मच अच्छा एक चीज आप जरा मद्देनजर रखिएगा कि सूबों जब से 18 अमेंडमेंट के बाद पोस्ट डिवोल्यूशन सिनेरियो में सूबे जो है वो जाहिर कुल्लन खुद मुख्तार है मैं ये वर्ड यूज करूँ लेकिन ये ऐसा इशू है कि इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है हम उसे फॉलो अप भी ले सकते हैं हमारा एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी ठीक है आई विल ट्राई माय बेस्ट के या फिर कंट्री प्लेटफॉर्म पे जिसमें कि प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक मीटिंग में जो है वो उनसे अपडेट जो है वो ले लिया जाए तो वी विल फॉलो इट अप नो वरीज थैंक यू मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं एक तो जब जिस तरह बताया गया है कि जो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर तो अभी 2-3 साल से ही हम जाहिर सुबह में इसके ऊपर चीज़ों को स्टडी किया और स्टार्ट हुई है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल से PIMC और इसके साथ साथ बाकी वेंडर है इस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर्स को पावर देने के लिए
ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन हो चुका है, कुछ प्लानिंग में है के ऊपर जो है वो सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि मैम रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और इसके साथ साथ सेल जो है वो स्टेबल है। पूरे सिंध में हमें अगर टेक्निकल सपोर्ट अगर मिलती भी है तो वो जस्ट एक दो डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन जो सेल है वो पूरे सूबे में काम करता है, सबका लाड़काना तक भी काम करता है। लेकिन अब उसका ये होता है कि रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, कमिटमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये सारी चीजें ये फेडरल के थ्रू ही चल रही हैं क्योंकि वही स्ट्रेटजी है उन्हीं फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से है, तो अब आगे फ्यूचर में जिस तरह रिजल्ट आएंगे तो कुछ आप लोगों का अपना प्रोविंशियल लेवल पर भी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है? मैम नहीं, वो अभी तक नहीं है। हमारी जो है प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जो भी डिसीजन हमने लेने होते हैं उससे हम ले लेते हैं, लेकिन ये एक कौन चेयर करता है? वो सेक्रेटरी चेयरमैन है, वर्क सेक्रेटरी खुद कर लेते हैं, किसी को स्पेशल सेक्रेटरी डीडी वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है। और कोई तो गवर्नेंस जी, और वो अप्रूवल जो उसके मिनट्स की हैं वो सेक्रेटरी खुद देता है, और वो पूरे सूबे के लिए होता है, हर डिवीजन कमिश्नर उसका हिस्सा होता है। और आपकी तरफ से भी मान लीजिए कि आपका So I think we do not have any further questions. Oh, Dr. Sabah, please. हम लोगों ने पहले भी एक कंसर्न रेज किया था वेब एक्सपो के हवाले से, जो फरवरी में था, और आपने कहा था कि एक्शन विल बी टेकन, लेकिन वो एनी रीजन वो हो गया। तो आई जस्ट वांट टू रेज के अब अक्टूबर में दे आर प्लानिंग अगेन, तो और कराची में प्लान कर रहे हैं, तो लेकिन यही बात so maybe we need to keep our eyes and ears open. So let me now request